Hello everyone. Let me know if you can hear me. Drop a thing in the comment, and we'll get started in a few minutes, basically. But yeah, Taylor, can you let me know if you can hear me? Yep. Sounds good. All right. How are we doing? Thank you, Faisal and Ali Jale. So let's get started. So, hey everyone, this is Tayeba. I'm the marketing and PR specialist at Remotebase. I hope you all had a great fun-filled weekend full of coding. So, today me and Aras will be going over how to set up your PowerPoint presentations and a few important points and rules that you must keep in mind while submitting your final project. So, let's get started. Okay, so we'll be covering the PowerPoint presentation as I mentioned before, and we'll be giving you an overview of the template. We'll also walk you through a few important pointers and rules. Aras will help you with the Devpost submission, and in the end, we'll have a Q&A session. So, moving on. Sorry. There we go. So, yeah, okay. So, let's move on to the sample format of your presentation. So this template is just for you to organize your thoughts, and feel free to use the template however you like. So remember, you have an option to choose whether or not you follow the exact same sequence and format. However, for your convenience, we'll be sharing the sample presentation with you over Pakistan Developers Forum through Slack. So the first slide, it's very important. It should include a big logo of your project. If you have one, that is completely optional, plus the name of your team and the name of the project as well. Now the second slide, yeah. Now the second slide should consist of an intro of your team and their backgrounds. You can add as little as you want and as much as you want. Remember, you'll have about 3 to 5 minutes to present your entire project. This presentation will be recorded. So make sure you wrap it up in time. Next, you'll have to name the challenge you opted for. You should add a problem statement. So make sure you write it out fully and include all the details in the opening presentation. So that was the introduction to our project presentations. You'll then be presenting the solution. So you can describe the solution and the reasoning, the thinking behind that solution. Next up, we have Aras Siddiqui, who will continue with the sample presentation format. Over to you, Aras. Thank you, Teva. Yeah, so basically, so as Teva said, so that's kind of like the start of our presentation, right? It's telling like the judges a little bit about yourself and kind of like what your background is. But now let's get into like the details of your project. So the hack that you actually worked on. So team strategy is your kind of portion where now that you've told them what your solution is, tell them how you got to that solution. Tell them what you were thinking. What was your approach? So if you're doing a hack, let's say if you were doing one of the JS banks, what you can mention is like, oh, I use a regular like banking app, but I want to like change it up, and this was how we did it. Talk about like your story here. Next up, we have design and architecture. So if you made like a Figma design, show that here. If you have like a big back end where there's like 3 or 4 things connecting to each other. Like if you're using like APIs and you're using like a cloud or a module from Redis, like tell us here like what type of architecture you're using, what connects to what. And with that, once that is done, then kind of tell us a bit about like your front end and back end, like which frameworks. Oh, can you not hear me? Give me a second. Okay, let me know now. Oh my God. Okay, it's my bad. I did not see that. Cool. Thank you. All right, so I'll go from the back slide too. So design and architecture basically means if you have like a Figma design, upload that up here.
And then if you have like any architecture, so if you're using like modules from Redis, if you're using like APIs, like let us know let us know which one you're using and like what where that connects in. Next up, kind of like talk about your code, talk about like what you're using for front end, like if you're using Node.js, if you're using React. Tell us about a bit of the back end and how it integrates all together. And here is like a good time to kind of also make sure that you're mentioning like the specific APIs that you were told to use for a specific challenge. When it comes to it, there are challenges like by JS Bank that they require you to use API, but there's also challenges by Redis where they kind of give you the whole technical documentation. So mention करें कि आपने documentation से आप go through किया है और end में आपको ये end में आपने ये use किया है. Or lastly, and the most important one, is the code demo कि आप अपना code दिखाएं और कैसे चल रहा है. And in the end, in the kind of like in this area, kind of like अगर आपने snippets डालने कोड के वो भी दिखाते हैं. Because हमारा एक चैलेंज जो भी है बेस्ट कोड का भी एक अवार्ड है. तो स्निपेट्स डाल दें दिखाते हैं कैसा आपने उसे स्ट्रक्चर किया है. बट कोड जो डेमो है ना, उसमें भी आपने एक वीडियो आप बना सकते हैं सेपरेट. नाउ जब आपकी प्रेजेंटेशन ही बन गई, कोड भी आ गया, अब नेक्स्ट सवाल है कि आपने ऑल ऑन डेव पोस्ट. तो बेसिकली आपकी जो सबमिशन डेडलाइन है वो आज 4:30 बजे. At 4:30, make sure that you submit your project. So you can start a project. So if you go on the remote base Devpost, you can start a project anytime. Like up is, I would recommend इस presentation के बाद जाके project start कर दें, चीज़ें डालना शुरू कर दें और बस changes जो भी आप changes करेंगे वो saved हो जाएंगे वहाँ पे. और submission 4:30 की रखें कि 4:30 पे जाके आपने submit दबाना है. And let's go through that process. जैसे आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं मेन चैनल से, आपको प्रोजेक्ट ओवरव्यू देना पड़ेगा, नाम, थोड़ा डिस्क्रिप्शन. प्रोजेक्ट ओवरव्यू से नेक्स्ट जाएंगे तो सर यही सारी थी. पर प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन से आगे जाएंगे तो आपसे पूछेगा कि आपने क्या सोचा था जब आप ये बना रहे हैं. सो एग्जैक्टली लाइक व्हाट यू रोट इन योर प्रेजेंटेशन, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी. तो आपकी सारी थॉट्स ऑर्गेनाइज हो जाएंगी इसमें. वो आपसे पूछेगा आपने कैसे सोचा था, आपने टीम वर्क कैसे किया, किस बंदे ने क्या-क्या किया. You have to like include all of that in DevPost. And remember, that's what the judges are gonna see. Whatever you write on DevPost is what you're gonna be like judged on. So make sure it's proper. Make sure there's no spelling errors. You're writing like full sentences and making sense of what's being written. And like I said, you can start the whole process, like the project overview, at any time, but submit आपने 4:30 से पहले करना है. पहले भी कर सकते हैं, but 4:30 तक आप सबमिट कर दें project. Um, yeah, 4:30. Just make sure. That's it. And a few important points हमें तैयबा बताएंगी कि क्या 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 important है. Okay, thank you, Aras. So your submission must be on time. The deadline for submission, as mentioned by Aras again and again, it's 4:30 p.m. Pakistan time. The submission must include the GitHub link. That is absolutely essential. You cannot make any changes to the GitHub post submission, so no changes after 4:30. We'll be able to check the edit timings for each project. You'll get around 2 to 3 minutes to present, and this presentation will be recorded. You must have your video on while presenting, so keep it switched on throughout the presentation. The entire presentation and demo must be in English because we have judges coming from all over the world. So international judges won't know Urdu, उनको उर्दू नहीं आती, तो आपने सब कुछ अंग्रेजी में English में ही करना है. So also you are supposed to keep a backup internet connection. You'll have to present within the allotted time, so no excuses there. Moreover, just summarizing on DevPost, you have to include the GitHub link, the recorded presentation video, 3 to 5 minutes. It should be 3 to 5 minutes long. You should focus more on the demo. Demo is more important, and so you'll get to answer all the questions of on DevPost.
हम्म, So yeah, that's it. I'll let Aras continue and brief us हाँ। about the judging criteria and the judging rounds. Aras? और इसी इसी बात पे तो बेसिकली जो हमने टेम्पलेट दिखाई है आपको, वो पोस्ट है इन पीडीएफ, वो आपके पास फुल एक्सेस होगा उसका, तो आप उससे एडिट कर सकते हैं। और जो लास्ट पॉइंट था उस पे टेंशन ना लें, अगर अगर आपका कोड चल नहीं रहा तो, बिकॉज वी नो लाइक देयर आर सम टेक्निकल इश्यूज, तो वो प्रेजेंटेशन में मेंशन कर दें। और वो आप डेव पोस्ट पे आप अपने 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 बता दें कि आपने अब तक क्या क्या किया। सो इट्स द एफर्ट दैट रियली काउंट्स, एंड द थॉट दैट यू पुट इनटू इट। इफ यू हैव ए, सो गिटहब पे आपने बेसिकली, ओ वेट, नेक्स्ट स्लाइड कर देते हैं। वही साइड है। एनीवेज, गिटहब पे मैं बता दूं, आप बेसिकली एक एक रिपोजिटरी बना दें और उस पे ही सब सब अपने कोड कमिट कर दें। अगर आपके पास चार चार पांच लोग हैं तो आप सबको एक ही रेपो में डाल दें। और क्योंकि उस पे फिर नजर आएगा कि कि किसने क्या कमिट किया। सो इट्स नॉट लाइक बाय वन वन डेवलपर। आप गिटहब का लिंक डाल दें, डेव पोस्ट पे जगह है डालने की। एंड लेट्स टॉक मोर अबाउट द रिकॉर्ड प्रेजेंटेशन। तो आप बेसिकली, आपने क्या करना है कि आप प्रेजेंटेशन जब आप बना लें अपनी पावर पॉइंट, तो आप अपनी टीम में से आप एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लें प्रेजेंटेशन के साथ। और आपके पास 3 मिनट का वो टाइम रख लें कि आप वॉक थ्रू करें प्रेजेंटेशन से कि मेरा मेरा नाम ये है, मेरी टीम ये है, हमने ये बनाया है। और आप वो खुद रिकॉर्ड करके आपने उसे डेव पोस्ट पे अपलोड करना है। तो इसका मतलब कि आपकी जो जो प्रेजेंटेशन होगी, जो जो कोड होगा, वो आप सब गिटहब पे गिटहब नहीं, सॉरी, डेव पोस्ट पे डाल दें, ताकि जो जजेस आके देखेंगे ना, वो वहीं से आपकी सारी आपकी पोस्ट देख लेंगे। और उसके अलावा ये भी देख लें कि आपका जो ये 3 से 5 मिनट का टाइम है ना, रिकमेंडेशन है कि आप लगा लें 3 मिनट प्रेजेंटेशन पे, कि आप बात कर लें जो जो हमने पॉइंट्स किए किए ना, डिज़ाइन और आर्किटेक्चर, फ्रंट एंड बैक एंड, उस पे बात कर लें 3 मिनट। और 2 मिनट का डेमो दे दें। इफ़ अगर आपका वो फुल फुल डेमो चल रहा है तो 2 मिनट उस पे लगा दें। पर मेक दैट ऑल इनटू वन वीडियो एंड अपलोड दैट वीडियो। And we'll share details on the dev post how to upload a video as well. वो मैं शेयर कर दूंगा पीडीएफ में, तो आसान हो जाएगा। What you can do is upload to YouTube as a unlisted video, और YouTube का आपके सामने लिंक डालना है आगे। So Next, also, हाँ, बताइए। any of your team members can present. Of course, the whole team can do so as well. So that's entirely up to you. और आप लोगों ने इतनी टेंशन नहीं लेनी. This is fairly easy, and we'll be sharing this presentation with you over Slack. So don't worry too much about it. हम्म। और मेक श्योर क्या करें कि आप एटलीस्ट सबमिट कराने आपने इतना टाइम लगाया काम करने में, लाइक इवन इफ बाय द एंड ऑफ द डे इट्स नाउ वर्किंग, लाइक आपका लाइक कोड नहीं चल रहा, जस्ट सबमिटेड, और हमें बता दें क्या आपने सोचा क्या था, क्या क्या लोड किया, क्या क्या चला और क्या क्या नहीं चला। जस्ट कम्युनिकेट विद अस एंड द जजेस वो अंडरस्टैंड। बट एट द एंड ऑफ द डे एफर्ट डालनी है सही सही वाली, और मतलब बताना है कि कुछ चला तो क्यों क्यों नहीं चला, और आपका प्लान क्या था उसके साथ, करने का क्या प्लान था। ओके, नाउ लेट्स गो टू लाइक द स्टेजेस। बेसिकली जो जजिंग की स्टेज है ना हमारी 3 है। वो पहला प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग है कि आप जब डेव पोस्ट पे सबमिट कर देंगे सारे प्रोजेक्ट्स, तो हम हमारी फर्स्ट जजिंग की स्टेज वो सारे प्रोजेक्ट्स को देख के उसमें से हर प्रोजेक्ट के लिए टॉप टॉप टीम्स निकालेगी। और वो टीम्स हमारे हो जाएंगी, जो जजेस पैनल्स हैं हमारे, वो वाले स्पॉन्सर्स के कम्युनिटी पार्टनर एंड एंड इंटरनेशनल जजेस। तो वो आके फिर हर उसको पॉइंट स्कोर देंगे और उन्हें रैंक करेंगे। और स्टेज 2 से हमें हमें अपने मिलेंगे विनर्स फॉर स्पेसिफिक चैलेंज। एंड द फाइनल स्टेज, फाइनल जजेस ये पिक करेंगे हमारे टॉप 3 विनर्स, जो 2.5 मिलियन वाला जो प्राइज़ है ना, तो वो टॉप 3 टीम्स को पिक करेंगे। बट ऑल्सो आप सोच रहे होंगे कि हमें किस एक क्राइटेरिया पे जज किया जा रहा है, तो वो भी बताना चलें कि आपने एग्जीक्यूशन और डिज़ाइन
आपका डिज़ाइन कैसा है, यूज़र एक्सपीरियंस के बारे में आपने सोचा है, आपने पर्सोनास बनाए अपने यूज़र के लिए। टेक्निकल सॉल्यूशन, कि आपने सॉल्यूशन सोचा कैसे है, आप सॉल्व कैसे कर रहे हैं प्रॉब्लम, इज़ इट अ फीजिबल सॉल्यूशन। ओरिजिनैलिटी, अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितना मतलब अपना वो अपना टेस्ट डाला है, अपना यूनिकनेस डाली है उसमें, दैट डेफिनेटली मैटर्स। कि आपने सीधा रॉबिनहुड कॉपी तो नहीं कर दिया उसके लिए चैलेंज के लिए। और नेक्स्ट और लास्ट वन इज प्रेजेंटेशन, कि आपकी प्रेजेंटेशन कैसी है, क्लियर है। एंड आई थिंक एक एक पॉइंट यहाँ पे मिसिंग है, पर मैं बता देता हूँ। इट्स इम्पैक्ट। सो आपकी जो ऐप आपने बनाई है वो कितने लोगों से यूज होगी, सो इज इट गोना हैव अ लार्ज इम्पैक्ट ऑफ like like a lot of people are going to use it versus it's going to be like 5 6 people are going to use that app. So impact is like the last one that you have to take into account. So another important point, how functional is the product? That is an important criteria. So make sure that your project is functional. Hmm. Yeah. मतलब चलना Cool. चाहिए. So yeah. चलना चाहिए, exactly. So yeah, and now well, and now if our team in the back can pull any questions to the front, and we'll be happy to take them. Yeah. Meanwhile, remember, guys, stay strong and positive and put your beast mode on. So we have only a couple of hours until the submission. You've got this. Remember, teamwork makes dream work. I'm sure Aras will agree with me. So don't worry, tough times don't last, but tough teams do. So you'll get और through this. हाँ, Got और this. दूसरा है कि आप जो ऐसे सवाल आया था, सवाल आ गया, चला गया. Okay, will all teams get to pitch or there will be some shortlisting? If yes, which part of the project will you be judging? So हाँ, जो shortlisting जो stage 1 वाली है ना, देखा अब जाएगा. It's like how complete is your dev post submission, right? कि आपने dev post पे वीडियो भी डाली है, आपने dev post पे GitHub का लिंक भी डाला है, आपने सारे सवाल के जवाबात दिए हैं, आपकी यू नो आपने अगर डिजाइन्स बनाए तो आपने डिजाइन्स के स्क्रीनशॉट्स भी डाले. दैट्स द फर्स्ट काइंड लाइक स्क्रीन लाइक शॉर्ट लिस्टिंग इन अ सेंस. But just that just has to make sure like the judges like aren't really wasting their time, like वो प्रोजेक्ट खोलें और प्रोजेक्ट आधा खाली हो. That's what I'm saying, like make sure कि आप सबमिट करें, पूरी चीज़ें सबमिट करें और अपने आप को एक्सप्लेन करें. तो that's the important part. Exactly. इतना perfect होने की भी ज़रूरत नहीं है. बस functionality, keep that in mind. That's an Mhm. important judging Mhm. criteria. Do we have to upload presentation with the code as well by 4:30? Yes, so basically so anything that needs to go up on Devpost needs to be up by 4:30. तो इसमें आप बेसिकली कर लें कि आपकी जो प्रेजेंटेशन है ना, वो तो आपने खुद रिकॉर्ड करनी है और आपका डेमो भी खुद रिकॉर्ड होना है, बट कोड आपका गिटहब पे जो होगा ना, वो सबमिटेड है बेसिकली. ऑलराइट, नेक्स्ट आ जाए. सही बात, गो अहेड. Oh, sorry, I was muted. Yeah, of course, we'll be sharing these slides on Slack. So stay tuned. We'll be sharing these slides right after this presentation. So right after this workshop. Can the pitch be recorded? Or yeah, so it has to be recorded. It has to be recorded and uploaded to Devpost. Aras, would you like to answer that? Give me a second. Okay, what's the next question here? We have multiple GitHub repos. Can we send more than one on Devpost? So unfortunately, you have to kind of like put a link to one, but I would kind of recommend like in that case आप fork कर सकते हैं वो वाली, और सबको एक में डाल दें, or you can just upload like a new folder if you wish. तो वो कर दें, but basically it has to be one repo और उसका आप लिंक डाल दें. GitLab, interesting question, Mohib. GitLab का Presentation.
सोचना पड़ेगा। ओके, प्रेजेंटेशन वीडियो मीन्स हाँ, सो ज़ैनी बेसिकली वो जो प्रेजेंटेशन वीडियो है ना, कि आप प्रेजेंटेशन जो आपकी है आप उसे रिकॉर्ड कर रहे हैं और उसकी वीडियो अपलोड कर रहे हैं। You can do it over Zoom. It's pretty easy. Zoom पर आप हाँ। प्रेजेंटेशन स्लाइड्स बड़ी आ रही हो और आप अपनी छोटी वीडियोस ऑन करके प्रेजेंट कर सकते हैं. One person can present or all of you can present as well. हम्म, Okay, so no, it's not compulsory to follow the template. That's just for you. That's just literally for we will share it with you, but you don't have to exactly follow the sequence. But it would be better if you follow the design. So yeah, that's completely up to you. Your choice. yeah. And then what else we got? Can we share GitLab? GitLab वाला मैं टीम से पूछ लेता हूँ, and then let me see if they got back. Oh, we'll get back to you on that, but do we need to upload the code in the presentation? Basically, आप कोड आपने वो बेसिकली ओके, कोड आप गिटहब पे अपलोड कर रहे हैं, राइट? बट आपने जो उसका उसका डेमो है ना, चलता हुआ कोड, वो आपने प्रेजेंटेशन में दिखाना है. You don't have to show the code itself in the presentation. We have built an app. Should we give it a link? Give the API link as well. I mean, you really don't have to give the API link. But if you just in your video कि आप दिखा दें, like अगर आपका APK है और आपके फ़ोन पे चल रही है, तो आप उसकी वीडियो बना के अपलोड कर सकते हैं. We have two one back. Yeah, basically वो अपने एक ही Devpost अपलोड करने देता है, तो just make sure आप अटैच कर लें, लिंक कर लें दूसरे के साथ. जैसे भी कर लें, जस्ट आपका एक लिंक हो जिससे आप आपकी सारे लिंक्स पे जा सकें. Okay, so we'll be sharing the format with you. This is, again, I repeat, this is not compulsory. It's not compulsory for you to follow the exact same format. That's entirely up to you. So you have to present within 3 to 5 minutes. तो उतनी ही detail होनी चाहिए. Mhm. एंड सबके लिए मैंने शेयर कर दी है प्रेजेंटेशन जो हमारी है इन जनरल, इन PDF. मैंने ऐड चैनल का कर दिया, तो आपको मिल जानी चाहिए. इफ़ यू स्टिल कैन फाइंड इट, लेट मी नो, और लेट एनी ऑफ द ऑर्गेनाइजर्स नो. ओके, एंड और हाँ, जो गिटलैब का पूछा था आपने, गिटलैब का लिंक इज फाइन, यू कैन ऐड दैट एज वेल. ओके, अदनान पूछते हैं, presentation 3 to 5 minutes should be video. Yes, that's the video that we're talking about. And your videos must be turned on as well, whoever is presenting. साद इस्माइल पूछते हैं गिटहब पे ऑर्गेनाइजेशन बना दें और सारे रेपो उसके अंदर डाल दें. ओह, बड़ा इंटरेस्टिंग. ये मैं अपने कॉलीग को रेफर करूँगा. हमजा थोड़ा इस पे चेक करके बता दें हमें कि ये लीगल है. बड़ा साद भाई ने बड़ा मस्त लूप होल निकाला है इसका. देखते हैं. ऑलराइट. हे हमजा, हमजा थोड़ा अभी शाउल हेलो आ गया. हेलो, हेलो. आपको मेरी आवाज़ आ रही है? सॉरी, जी मेरा जी ना आ रही है. इंटरनेट का थोड़ा सा इशू हुआ हुआ है. जी जी, वो ब्रेक हो रही थी मुझे आपकी आवाज़ जी. ओके, या सो बता दें, अगर हम गिटहब का एक ऑर्गेनाइजेशन हाँ, अकाउंट बनाएं, बिल्कुल. दैट्स फाइन. जी जी, गिटहब के लिए आप लोग गिटलैब भी यूज़ कर सकते हैं, और गिटहब ऑर्गेनाइजेशन बना के आप वो पूरी की पूरी रिपोजिटरीज वहाँ पे भी उस तरह भी शेयर कर सकते हैं. और मैंने सबसे आसान तरीका ये बताया कि आप मेन जो गिटहब रिपोजिटरी है उसको वहाँ पे ऐड करें, और बाकी जो उनसे गिटहब जो आपकी बाकी जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको
प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन में ऐड करके अटैच कर दें। नाइस। साज ने सबके लिए इजी कर दिया सीन। थैंक्स साज। you're the real superhero right now. Okay. Any other questions that we get? Okay. We're basically out of time. Limit Dragon, so we'll just like give you like our like parting remarks. तो हाँ, like don't stress ना करें। ठीक है, आपने काम किया है, बड़ा बड़ा टाइम लगाया है, तो जो जो आपने किया है उस सबको डॉक्यूमेंट करें, उस सबको देखें कि आपने क्या किया है, और एंड में टेंशन नहीं लेनी। बस आपने जो किया है उस पे भरोसा रखें और अच्छे से प्रेजेंट कर दें, एंड इंशाल्लाह ऑल द बेस्ट। तैयबा, आप बताएं रिमार्क्स Yeah. क्या देंगे So पार्टिसिपेंट के you लिए? guys have like 2 more hours. Yeah. तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी. So you've got this. This is literally the last stage. तो आपने सबमिट ज़रूर करवा देना है. That's the most important point. 4:30 आप लोगों ने सबमिट करवा देना है, जितना भी हुआ है, जो भी हुआ है. So जिस तरह एग्जाम्स में होता है ना, वो एंड पर आपसे एग्जाम छीनने आ जाते हैं. So हम आपसे प्रोजेक्ट्स आपके छीनने आ जाएंगे. यही समझ लें आप. और just submit it. पर यहाँ पे छीनना कम होगा। बस एक लिंक है, वो बंद ही हो जाएगा खुद ही। तो नहीं, we कोशिश trust you करें। guys. I'm sure आप लोग कर देंगे. हाँ, बस कोशिश करें कि वो दे दें बस। ओके। I Yeah. think that's it. So Thank you everyone for thank you joining us. guys. Wish you all the best, and अगर कोई सवाल है तो डेफिनेटली पूछ लें मेन चैनल में, और बता दें कि टेम्पलेट मिल गई, नहीं मिली तब भी जनरल या उसमें आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। चलें, गुड लक। we'll see you all after 4:30. Bye. See you. Bye bye. Good luck.